नमस्कार दोस्तों। आमतौर पर फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को होती हैं ब्लॉकबस्टर रिलीजेस, लेकिन अब ओटीटी का ज़माना है। अब हर दिन शुक्रवार है और जिस दिन आपने फिल्म रिलीज़ कर दी उस दिन ही ब्लॉकबस्टर है। और शायद यही वजह है कि निर्मला सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने इस बार ट्यूसडे ब्लॉकबस्टर रिलीज चुनी है, बही खाता द बजट स्टोरी। आइटम नंबर 1, माननीय मंत्री महोदय श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। The overall sharp rebound and recovery of the economy is reflective of our country's strong resilience. India's economic growth in the current year is estimated to be 9.2%, highest among all large economies. भाई अक्सर कोई भी कहानी कही जाती है तो आप यही सोचते रहते हैं कि यार इसका प्लॉट पॉइंट क्या है, कहते हैं कहना क्या चाहते हो। लेकिन वित्त मंत्री ने ना बहुत ज़्यादा समय बिताया नहीं इस बारे में। बजट स्पीच की शुरुआत होते ही आपको कहानी क्या है, प्लॉट पॉइंट क्या है, वो पता चल गया था कि कहानी थी अमृतकाल की। We are marking Azadi ka Amrit Mahotsav and have entered into Amrit Kal, the 25-year-long lead up to India at 100. Honorable Prime Minister in his Independence Day address had set out the vision for India at 100. By achieving certain goals during Amrit Kal, our government aims to attain this vision. They are complementing the macroeconomic level growth focus. अब आप पूछ रहे होंगे उत्कर्ष, फिल्म तो पूरी निकल गई, अमृतकाल आया नहीं। तो भाई गेम ऑफ थ्रोन्स में भी पहले एपिसोड में विंटर आया था की बात हुई थी, पर विंटर आया क्या? विंटर आने में समय लगा। तो यहाँ पे तो अमृतकाल आना है, थोड़ा समय लगेगा। और ये बात हम अकेले नहीं कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी ये बात कह रहे हैं कि ये जो बजट था वो लॉन्ग स्टोरी थी, वो सीजन दर सीजन चलेगी। आइए सुन लेते हैं उनकी बात को। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव और बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। ये एक पिछले साल के बजट का कंटिन्यूएशन में है और ये इंडिया को लॉन्ग टर्म ग्रोथ में सस्टेन्ड ग्रोथ देगा लंबे समय तक। इसकी खासियत यह है कि ये पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर फोकस करता है, मतलब आप और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे। पिछले साल 5.54 लाख करोड़ दिए गए थे, वो बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिए गए हैं। और अगर स्टेट्स को मिलाकर देखें तो करीब 10 लाख करोड़ सेंटर खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो कि 4.8% है आपके जीडीपी का। तो पूरा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। और यही बात हमसे सुनील शाह ने भी कही, तो और भी एक्सपर्ट हैं जो इस बात को मानते हैं। ये सुनते हैं। No negative surprises is the biggest positive of this budget. और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे मैडम प्राइम मिनिस्टर ने जो मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने जो कैपेक्स किया है, जो इंक्रीज किया है, वो भी विल गिव अ बूस्ट टू द इकोनॉमी। सो ओवरऑल आई थिंक अ वेरी फेयर बजट अंडर द सर्कमस्टांसेस, क्योंकि जिस हिसाब से जो हेडविंड्स चल रहे हैं हमारे अगेंस्ट, तो दिस अ गुड बजट अंडर द सर्कमस्टांसेस। अब भाई कोई भी फिल्म बनेगी तो डायलॉग तो होंगे ही, और हम तो भाई हिंदुस्तान से हैं, रामायण के देश से हैं, महाभारत के देश से हैं। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए वित्त मंत्री ने जब स्क्रिप्ट राइटिंग करी डायलॉग की, तो महाभारत का भी रेफरेंस लिया जब डायरेक्ट टैक्स को समझा रही थी। आइए सुन लेते हैं इस डायलॉग को। Little verse from the Mahabharata. I wouldn't spend more time reading because I would like the speech to get enough time. However, the substance of it is the king must make arrangements for yoga kshema, which is the welfare of the populace, by way of abandoning any laxity and by governing the state in line with dharma, along with collecting taxes which are in consonance with dharma. This is Mahabharata Shanti Parva Adhyaya, Shloka 11 from 72. Drawing wisdom from our ancient texts, we continue on the path to progress. The proposals in this budget, while continuing with our declared policy of stable and predictable tax regime,
intend to bring more reforms that will take ahead our vision to establish a trustworthy tax regime. This will further simplify the tax system, promote voluntary compliance by taxpayers, and reduce litigation. Introducing new updated return. India is growing at an accelerated pace and people are undertaking multiple financial transactions. The Income Tax Department has established a robust framework of reporting of taxpayers' transactions. In this context, some taxpayers may realize that they have committed omissions or mistakes in correctly estimating their income for tax payment. To provide an opportunity to correct such errors, I am proposing a new provision permitting taxpayers to file an updated return on payment of additional tax. This updated return can be filed within 2 years from the end of the relevant assessment year. अब भाई फिल्म का प्लॉट पॉइंट भी पता चल गया, डायलॉग बाजी भी हो गई, लेकिन अब इस मिशन को अचीव कैसे करेंगे? प्लान क्या है? क्या है प्लान? तो प्लान है मास्टर प्लान, और ये मास्टर प्लान है पीएम गति शक्ति योजना। इसके चारों पिलर्स जो हैं वो एवेंजर्स का काम करेंगे। और अगर हिंदुस्तानी भाषा में बात करें तो देसी एवेंजर्स हमारे रोहित शेट्टी के, चाहे वो फिर वो सिम्बा, सूर्यवंशी और सिंघम हो। The scope of PM Gati Shakti National Master Plan will encompass the 7 engines for economic transformation, seamless multimodal connectivity, and logistics efficiency. It will also include the infrastructure development by the state governments as per Gati Shakti Master Plan. The focus will be on planning, financing, including through innovative ways, use of technology, and speedier implementation. The projects pertaining to these 7 engines in the national infrastructure pipeline will be aligned with PM Gati Shakti framework. The touchstone of the master plan will be world-class modern infrastructure and logistics synergy among different modes of movement, both of people and goods, and location of projects. This will help raise the productivity and accelerate economic growth and development. Road transport. PM Gati Shakti Master Plan for expressways will be formulated in 22-23 to facilitate faster movement of people and goods. The national highways network will be expanded by 25,000 kilometers in 2022-23. 20,000 crores of rupees will be mobilized through innovative ways of financing to complement the public resources. The data exchange among all mode operators will be brought on unified logistics interface platform, designed for application programming interface. This will provide for efficient movement of goods through different modes, reducing logistics cost and time, assisting just-in-time inventory management, and in eliminating tedious documentation. Most importantly, this will provide real-time information to all stakeholders and improve international competitiveness. Open source mobility stack for organizing seamless travel of passengers will also be facilitated. अब भाई जनता को ये फिल्म पसंद आएगी नहीं आएगी वो तो जनता जनार्दन की राय है, हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन जो फिल्म के प्रोड्यूसर हैं यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसके सर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने स्क्रिप्ट को थम्स अप दिए हैं, बिल्कुल 100 मार्क्स दिए हैं। सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इन्वेस्टमेंट, मोर ग्रोथ और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है ग्रीन जॉब्स का। ये बजट तत्कालीन आवश्यकताओं का भी समाधान करता है
और देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य को भी सुनिश्चित करता है। ये पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। अब भाई फिल्म बन गई, लेकिन फिल्म में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है फिल्म का एंटागनिस्ट, क्योंकि आजकल विलन नहीं बोलते हैं, नेगेटिव वर्ड लगता है, लेकिन इस बार विलन कौन है? इस सीज़न के विलन की बात करें तो इस सीज़न की जो विलन है वो है महंगाई डायन, जो हमें तो खा ही रही है और उसकी चिंता जो है वो वित्त मंत्री को भी सता रही है। लेकिन अब इस विलन को कैसे लड़ा जाए? इसको लड़ना होगा आपको ऑफेंसिव तरीके से ही, टुकुर खेल के, जैसे कृष्णमचारी श्रीकांत 1983 1983 वर्ल्ड कप की स्टोरी आई है उसमें खेलते थे, वैसे ही ऑफेंसिव खेलना होगा। और वैसे ही खेला है निर्मला सीतारमन ने एकदम ऑफेंसिव तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को करीब 35% बढ़ा के, क्योंकि हिंदुस्तान है, झुकेगा नहीं। In 22-23, in accordance with the recommendations of the 15th Finance Commission, the states will be allowed a fiscal deficit of 4% of the GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms, for which the conditions have already been communicated in 21-22. Fiscal management. As against a total expenditure of 34.83 lakh crores of rupees projected in the BE 21-22, the revised estimate is 37.70 lakh crores. The revised estimate of capital expenditure is 6.3 lakh crores of rupees. The revised fiscal deficit, Honorable Speaker, in the current year is estimated at 6.9% of the GDP, as against 6.8% projected in the budget estimates. The fiscal deficit is in 22-23 is estimated at 6.4% of the GDP, which is consistent with the broad path of the fiscal consolidation announced by me last year to reach a fiscal deficit level below 4.5% by 25-26. इस फिल्म में जो शॉक वैल्यू है, वो शॉक वैल्यू एक्चुअली शॉक लगा क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को। हमारे यहाँ कहावत है यूपी में, कहते हैं कि चौबे छब्बे बनने गए और दूबे बन के रह गए। तो जो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स है उनके साथ बजट की स्पीच के बीच में ही वक्त बदल गए, हालात बदल गए। अब ये सब क्या हुआ और कैसे हुआ, उन सबको समझाने के लिए हमारे साथ सृष्टि मौजूद है। सृष्टि, क्या हम कहेंगे कि जो जोर का झटका है वो जोर से ही लगा है? तो उत्कर्ष, आज जो भारतीय क्रिप्टो ट्रेडर्स के साथ हुआ है उसको आसानी से समझने के लिए आइए एक बॉलीवुड मूवी से रिलेट कर देते हैं। कुछ समय पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था गॉड टू सी ग्रेट हो। इस मूवी में अभिनेता भगवान के सामने एक इच्छा रखता है, भगवान उसे पूरा भी कर देते हैं, पर बाद में उस इंसान को ये फील होता है कि क्यों ही भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी और अब ये मेरे लिए एक परेशानी का कारण बन गई है। और कुछ ऐसा ही हुआ है भारतीय क्रिप्टो ट्रेडर्स के साथ, जहां पे कई समय से उनकी सरकार से ये मांग थी कि क्रिप्टो ट्रेडिंग को भारत में लीगलाइज कर दिया जाए। आज भगवान बन के निर्मला सीतारमन जी आई और उन्होंने बजट 2022 में कहा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग बैन होगी, ऐसा उन्होंने इस पे कुछ भी बयान नहीं दिया, पर साथ ही इस पे टैक्स लगा दिए और जो टैक्स है वो भारी मात्रा में लगाए गए हैं। अगर जो भी गेन्स होते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग पे उस पे 30% का टैक्स लगेगा और सिर्फ यही नहीं, जो सेल वैल्यू है क्रिप्टो ट्रेडिंग की वहां पे 1% का TDS भी कटेगा। तो क्रिप्टो ट्रेडर्स की बातें सुनी सरकार ने, उसको इन्होंने बैन नहीं किया पर इसके ऊपर भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया और इसको लेकर कई सारे मीम्स भी बन रहे हैं जो कि आप हमारी स्क्रीन्स पे अभी फिलहाल देख भी रहे होंगे। तो क्रिप्टो ट्रेडर्स की बातें सुनी सरकार ने, बट उसी के साथ उनको भारी मात्रा में आने वाले समय में टैक्स भी चुकाना पड़ेगा। अब भाई पूरी मूवी निकल जाए और कुछ गाना वाना ना हो तो फिर ये हिंदुस्तान की फिल्म कैसे हुई? अब वित्त मंत्री ने तो कोई गाना नहीं सुनाया है, लेकिन उसमें हमारी मदद करिए विजय केडिया ने अपना एक गाना बना के आइए सुन लेते हैं उनके गाने को। बोली मैडम हमसे माई मगन डोंट यू वरी,
तैयार। भाई ये थे विजय खेड़िया आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं तो जनता जनार्दन की क्या राय रही है, कैसी लगी उनको ये मूवी? क्या उनको ये मूवी मसाला लगी, क्या एक्शन लगी, क्या उनको लगा ये मूवी थोड़ी स्लो थी या एक लॉन्ग टर्म ड्रामा है जैसे कि हमारे क्रिटिक्स ने बताया? तो इन सब के साथ खुशबू पहुंची जनता जनार्दन के पास जानने की उनका वर्डिक्ट क्या था इस मूवी को लेकर। आइए सुन लेते हैं। फिल्में रिलीज होती हैं शुक्रवार या गुरुवार को, लेकिन देश की पिक्चर कैसी होगी, यानी बजट पिक्चर, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार के दिन अनाउंसमेंट किए हैं। लोगों की उम्मीदों पर ये कितना खरा उतरा है, कितना खरा नहीं है, ब्लॉकबस्टर है या फ्लॉप है, चलिए जानते हैं लोगों से कि ये बजट पिक्चर को कितनी रेटिंग देते हैं। How do you rate the budget? I mean, I would rate it above average. There were many things that they considered this time. There were few things that they left, but still, I feel that the budget was really good. Would you like to कोई रेटिंग देना चाहेंगे? मान लो कोई फिल्म है, मान लो 5 स्टार की मैक्सिमम रेटिंग है, तो सबसे लोएस्ट रेटिंग या अपने हिसाब से कितना रेटिंग देना चाहेंगे बजट? I wouldn't go lowest. Actually, it is pretty good, so I would say 4 star. I think for me it was a 3.5 budget, considering happy with the fact that what government had in store for the startup community. Okay, why I would deduct 1.5 marks for the government was because it was a plain cliche infrastructure budget. And again, if I look at from a common man perspective, what we looked out as an individual was an income tax slab. Okay, there was no change in income tax slab, and if you can analyze the budget, you know, it can directly lead on to one thing, that there will be some kind of pressure which will be impacted on RBI. आपको कैसा लगा बजट? So जैसा रेगुलर एवरी ईयर इट अपीयर्स। कोई इनकम टैक्स में कोई स्लैब में चेंज नहीं किया, सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कैसा लगता है? ये अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। पर बजट आप फॉलो करते हो ना अच्छे से, तो अगर मान लो कोई टैक्स में चेंज नहीं हुआ, कोई बड़ा स्कीम अनाउंस नहीं किया घर के लिए ना, तो आपको कैसा लगता है, कितना रेटिंग देना चाहेंगे बजट को? मान लो पिक्चर है 5 मिनट की, तो 5 स्टार का कुछ पिक्चर देना है, क्या बताएंगे उसमें आपको, क्या कर सकते हो उसके लिए? हम गरीब आदमी को क्या करना है, रोज खाने वाले आदमी हैं। फ्लॉप शो, ब्लॉकबस्टर शो या एवरेज शो? I guess average. एवरेज शो। Average. पिछले साल के बजट के हिसाब से मुझे लगा ये सब बजट में दम नहीं था इतना। बिल्कुल दम नहीं था। क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? मुझे एक्चुअली इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, बट सबसे बैड इसमें क्रिप्टो पे 30% टैक्स लगा, वही लगा। अगर मान लो 5 स्टार में से रेटिंग देना चाहेंगे तो कैसा लगा? 3.5। जनता को कैसा लगा ये ब्लॉकबस्टर शो? कुछ ने अच्छी रेटिंग दी, कुछ ने खराब रेटिंग दी, लेकिन भाई अब कोई भी शो होता है तो क्रिटिक्स तो बहुत ज़रूरी होता है ना, क्योंकि क्रिटिक्स से आपको बताते हैं कि टेक्निकली कितना साउंड रही है, चाहे वो फिल्म मेकिंग हो, चाहे वो आर्ट हो, कोई भी कहानी हो। तो आइए क्रिटिक्स ने इसको कितने नंबर दिए, बात सुन लेते हैं शंकर शर्मा की। शंकर शर्मा ने क्या कहा इस बजट को लेकर? It's a huge thumbs up. I was going through through my buy list. I mean, companies I've invested in, companies I plan to invest in, and almost all the names are there in terms of the sectors. You have drone, you have companies focused on the environment, organic farming, EV, 5G, optical fibers. I mean, it's fantastic. I mean, I think I had inside information on what the budget was going to have. I mean, this was really something for me personally as an investor, was music to my ears. What is not music to the market's ears, I think that's the reason why the cool off is happening, is because you are now in the realms of a very, very high fiscal deficit situation in a time when the global liquidity conditions are not that favorable. We all, in a way, if you see, focus for this government has been for the last several budgets that never mind the fiscal deficit, let us go for growth. Over time, inflation will take care of itself. Over time, growth will moderate the deficit rather than just focusing on the deficit and thereby reducing the growth, inherent growth in the economy. That's been the overarching view of this government. Now, supporting that view has been a very benign global liquidity situation for the last 4-5 years. Now, that unfortunately is no longer the case. This year, we know that the US will hike rates between 3 and 5 times. Globally, the trend will be upwards to fight inflation, because if I know anything about markets, I do believe now that
your commodity cycle is just getting warmed up, which means that there will be upward pressure on inflation. Overall, I think this is a great budget. The market may or may not react favorably just on this day, but I think looking ahead, every single thing that I wanted in the budget is right. भाई जब तक ये फिल्म ख़त्म हुई तब तक एक बहुत बड़ा सवाल था, जैसे बाहुबली में था कि बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा और क्या हुआ, वैसा ही क्रिप्टोस के साथ रहा, क्योंकि सबको इस बात का डर था कि ये बैन होंगे नहीं होंगे या केवल टैक्स लगाए, इसको आगे कैसे देखते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या कहा, ये सुन लेते हैं। Introduction of a central bank digital currency will give a big boost to digital economy. Digital currency will also lead to a more efficient and cheaper currency management system. It is therefore proposed to introduce digital rupee using blockchain and other technologies to be issued by the Reserve Bank of India starting 2022 and 23. और एंड में जो मेन डायलॉग रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर के इस पूरे फिल्म में, वो सुन लेते हैं आपको। Capital investment holds the key to speedy and sustainable economic revival and consolidation through its multiplier effect. Capital investment also helps in creating employment opportunities, induced enhanced demand for manufactured input from large industries and MSMEs, services from professionals, and help farmers through better agri-infrastructure. The economy has shown strong resilience to come out of the effects of the pandemic with high growth. However, we need to sustain that level to make up for the setback of 2020-2021. As outlined in Para 5 earlier, the virtuous cycle of investment requires public investment to crowd in private investment. At this stage, private investments seem to require that support to rise to their potential and to the needs of the economy. Public investment must continue to take the lead and prime the private investment and demand in 2022-23. Considering the above imperative, the outlay for capital expenditure in the union budget is once again being stepped up sharply by 35.4% from 5.54 lakh crore in the current year to 7.50 lakh crores in 22-23. This has increased to more than 2.2 times the expenditure of 2019-20. This outlay in 22-23 will be 2.9% of the GDP. Effective capital expenditure. With this investment taken together with the provision made for creation of capital assets through grants and aid to states, the effective capital expenditure of the central government is estimated at 10.68 lakh crores in 22-23, which will be about 4.1% of the GDP. चलिए, बही खाता था बजट स्टोरी में इस साल के लिए इतना ही, लेकिन अगले साल जब इसका सीक्वल और अगला सीजन आएगा तो फिर लेके आएंगे आपके साथ यही रोचक किस्से। बोली मैडम हमसे माई मगन डोंट यू वरी, बोली मैडम हमसे माई मगन डोंट यू वरी, बैठी हूँ मैं करने सारी चिंता दूर तेरी